पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं स्विस, फ्रेंच, सिंगापुरियन, राजस्थानी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस के राइटर डायरेक्टर अनूप सिंह। ये जो फिल्म है कई अरसा इसे लगा है फाइनली इंडिया रिलीज के लिए। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये दिखाई जा चुकी है, पसंद की जा चुकी है और इस फिल्म को एक तरह से द लेट एक्टर इरफान खान की फेयरवेल फिल्म की तरह भी देखा जा रहा है। सो जाहिर सी बात है बहुत सारे इमोशंस मेकर्स के और हम ऑडियंस के इस फिल्म से जुड़े होंगे। सो ऑफ कोर्स इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हम करेंगे, बट अनूप, a warm welcome to you on our platform. Thank you. It's such a great pleasure being here. The pleasure is all ours because I'm sure there is no film audience या फिर कोई ऐसा थिएटर या ऑडियंस नहीं है फिल्म लवर जिन्होंने इरफान साहब के काम को पसंद ना किया हो, एंड यू ब्रिंगिंग दिस फिल्म फॉर अस इज नथिंग लेस देन अ ट्रीट। Thank you so very much. The treat is really for us because we have waited many years to bring this film to India. Right. और अब जब रिलीज हो रही है finally, I can only say thank you to all the people who have made it possible. हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 3 साल लग गए उनको ये फिल्म इंडिया लाने में। कुमार मंगत साहब, पैनोरामा स्टूडियो के, शिव शर्मा, 70mm Talkies. Thank you so very much. You know, this speaks for the passion जो लोगों का इस फिल्म के लिए रहा होगा और कन्विक्शन जो इस फिल्म की I'm not talking about success in terms of money, but success in terms कि ये लोगों के दिल तक पहुंचने की काबिलियत रखती है कि इतने इंतजार के बाद एट अ टाइम जहां इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे टू द फिल्म फाइनली गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द डे। अनूप, रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर मेकिंग इस तरह की एक फिल्म जिसको लेके कन्विक्शन है लोगों में। Thank you so very much. लेकिन ये कन्विक्शन सिर्फ मेरा नहीं है, राइट। ये कन्विक्शन इरफान का भी है, गुलशिफ्त फरहानी का भी है, वेदा रहमान का भी है। I agree. So थोड़ा सा बताइए बिकॉज जो टीजर हमने देखा है, of course you know you have done there well there as well क्योंकि right amount of intrigue आपने definitely पैदा की है। One. Secondly, I'm still getting goosebumps when I'm saying this to you. Watching Irfan Saab once again, even if it is for the last time on this kind of film, वो एक अपने आप में treat है। तो क्या है फिल्म, सब्जेक्ट क्या है और क्या एक्सपेक्ट करें एज ऑडियंस? हम किस्सा शूट कर रहे थे, जी। you know, this was 2013 और जैसे पूरा इंडिया जानता है एक जो इंसिडेंट हुआ था 2012 में दिल्ली में एक बस में, उसने it changed, मुझे लगता है कि हमारा जो स्पिरिट है एज अ नेशन उस इंसिडेंट ने चेंज कर दिया था। तो वो जो हादसा था वो 1 साल बाद भी मेरे जहन में बहुत ही शोर के साथ जिंदा था मेरे अंदर। एंड जब किस्सा की शूटिंग खत्म हुई, I was in post production, तो शायद उस वक्त थकान बहुत हो गई थी और किस्सा की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी। So I kept on dreaming a lot. और ऐसे ऐसे इमेजेस आ रहे थे जो काफी भयानक और डरावने थे और मैं उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था। I was completely haunted by them. तो मुझे पता था कि उनका कुछ लेना देना है उस हादसे से जो हुआ था 212 में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है। ये तो सपने थे। तो to escape them, to find my way out of them, I thought I would just write them down. तो ये जो images थी मैंने शुरुआत की उनको लिखने के लिए और आस्ते आस्ते ये एक कहानी का इन्होंने एक कहानी का रूप ले लिया, which is the Song of Scorpions. तो जो Song of Scorpions है उसका कुछ लेना देना नहीं है exactly उस हादसे से, लेकिन जो इमोशनल टेक्सचर है, जो इमोशंस है, वो मुझे लगता है उससे जुड़े हुए हैं उस हादसे से।
हमारी जो कहानी है एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में रहती है। ये कम्युनिटी it believes that all the poison in our world, whether it is resentment, bitterness, or the bite of a scorpion, that the way we can heal it is by singing. You know, एक ऐसा मंत्र हम गा सकते हैं जो हर तरह का विष दूर कर देगा. You know, so really at the core of the film, for me, is that the world in which we live in today is a world which is full of violence all around us. And with every breath that we take, we breathe in this pollution, we breathe in this violence. However, when we breathe out, we have a choice. Do we want to breathe out the same violence that we have taken in? Or can we choose to breathe out a song? That really is at the core of the film. And I think it's very much, therefore, a film of our time. Right. Now, this brings me to the next question. Your choice of lead actors. जहाँ एक तरफ इरफान साहब है, वहाँ you have this Iranian French lead actress, Gulshifte, and then you have Waheeda ji. तीनों की अपनी एक यूनिक एसेंस है that they bring on the table. और इन तीनों को एक साथ लाना, how did you manage? ये तो कभी कभी किस्मत साथ दे जाती है. You know? जब पहली बार मैंने कहानी सुनाई इरफान को, वो कुछ देर सिर्फ देखते रहे मेरी तरफ, कुछ बोले नहीं. फाइनली वो कुछ थकान से उन्होंने कहा कि अनूप, तुम ऐसे रोल्स लाते हो मेरे लिए जो मुझे पता है मुझे नहीं करने चाहिए, you know? लेकिन मैं किए बगैर रह नहीं सकता. you know? तो चलो हम करते हैं. So that was इरफान. you know? जब मैं वहीदा जी के पास गया, उन्होंने किस्सा देखी हुई थी, तो बहुत खुश थी वो फिल्म देखने के बाद. तो मुलाकात के लिए तो हाँ कर दी उन्होंने, you know? लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं अब एक्टिंग नहीं करती हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए हैं, and I don't want to act anymore. I'm a photographer nowadays, you know. Yeah. मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ, फोटोग्राफ्स लेती हूँ, you know, और लाजवाब फोटोग्राफ्स लेती हैं वो. तो उन्होंने शायद मेरी शक्ल देखी होगी, you know, that I got a little sad. कहते अच्छा तुम बताओ तो सही, तो ये रोल क्या है? So I said, you know, वहीदा जी, मैं ऐसे सुनाता हूँ आपको कि ये रोल एक ऐसी औरत है, औरत के बारे में है, who is a singer in the desert. And when she sings in the desert, the water begins to rise and flowers begin to bloom. You know? So wo, I could see immediately a kind of sparkle in her eyes. तो उन्होंने कहा, तो ये गाती हैं? I said, yes, she's a singer. And through her singing, she brings new life around her. You know? She said, is it possible? You know, she is such a gracious woman. Is it possible कि ये फिल्म के जो गाने हैं मेरे लिए, वो मैं अपनी आवाज में गाऊं? Oh. Yeah. So that was my secret desire, you know. तो मैंने कहा, of course. So for the first time in Vaida's career, you will hear one song in the film, which is partly sung by Vaidaji herself in her own voice. Wow. And we have just released the song just now. It's a song called Bijuria, and you can see it on YouTube whenever you get a moment. Right. And how did you bring Gulshifte to the Actually, we didn't bring Gulshifte to the film. Gulshifte, she came to the film. Okay. You know,
हाँ, मैंने कहा कभी कभी किस्मत की बात होती है। तो इरफान और मैं एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थे। और जैसे ये फेस्टिवल्स में होता है कि स्क्रीनिंग के बाद वहाँ किस्सा दिखाई जा रही थी। हम्म। किस्सा के स्क्रीनिंग के बाद Q&A होता है। तो हमने Q&A खत्म कर लिया था एंड वी वर कमिंग डाउन द पोडियम। और काफी भीड़ थी। And we saw this really marvelously beautiful, gorgeous woman walking towards us through the crowd, you know. और हमारे सामने आ गई तो उसने हमसे कहा कॉफी। तो गुलशिफ्ते फरहानी को हम ना नहीं बोल सकते कॉफी के लिए, you know. So हम चले गए उसके साथ कॉफी पीने के लिए। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 days जब तक हम थे फेस्टिवल में, हर मिनट हमने साथ बिताया, ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक। फिल्म साथ में देखते थे, खाना पीना साथ में, और बहुत ही ज्यादा बातचीत कर पाए हम हमारे बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में, एक्टिंग के बारे में, सिनेमा के बारे में। तो मैंने देखा कि आप शायद जानती हैं कि गुलशिफ्ते हैज बीन एक्साइल्ड फ्रॉम हर कंट्री, फ्रॉम ईरान। तो you can imagine her pain that she cannot go back to her people, to her country, to her family. She can't go back, you know. और जब गुलशिफ्ते ने ये बात बताई हमको, what amazed me was जब वो सुना रही थी that there was no sense of bitterness or resentment in her voice, you know. In fact, she seemed to suggest that our identity as a human being, as an actor, is really not only created by borders in which you're born, but sometimes you realize that as a human being, you belong to the cosmos, that is your real home. Okay, that the whole earth is your home. And I think that is what makes her the tremendous actress that she is. कि वो हर तरह की दुनिया में जी सकती है, उसके लिए बॉर्डर्स मायने नहीं रखते हैं, हर तरह के बॉर्डर्स वो क्रॉस कर सकती है। राइट। तो ये जब बात सुना रही थी हम मुझे और इरफान को, एक ख्याल आया मेरे जहन में कि ये जो नई स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस, और उसमें जो मेन वुमन प्रोटैगनिस्ट का रोल है नूरन, she is also a woman who is during the happening of the film, of the story, she is also a woman who finds herself exiled from her home, from her village, and in many ways from her own body. तो जब गुलशिफ्ते ने सुनाना शुरू किया अपने बारे में and her sense of exile, और कैसे वो exile जी रही है, उसमें जो स्पिरिट थी, उसमें जो सेंस ऑफ फ्रीडम था, उसमें जो रिजेंटमेंट और बिटरनेस नहीं थी, क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस जो उसके आवाज में थी, मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे नूरन के बारे में बात कर रही है। Okay. So by the time she was ready to go, I knew and Irfan knew, that this is our actress for the Song of Scorpions. Right. And when I asked her to be in the film, she said, "Yes, I've been waiting for you to ask. What took you so long?" Yeah. Right. लेकिन जो बैकड्रॉप है आपकी फिल्म का, वो इट इज राजस्थान, इंटीरियर्स थार में आपने जाके शूट किया, एंड जाहिर सी बात है कि आपके एक्टर्स वो लैंग्वेज भी पकड़े, जो एक राजस्थानी डायलेक्ट होता है, उसका जो एक एक्सेंट होता है। वी ऑल नो व्हाट अ ब्रिलियंट dialect picker Irfan Saab has been. Vaida ji, of course, she's the veteran. But ये challenging रहा to make all your actors have that kind of dialect कि हमें एक लम्हे के लिए भी ऐसा ना लगे कि the backdrop is not Rajasthan. भाषा को लेकर मेरे जहन में हमेशा एक बात रही है
कि हम समझते हैं कि भाषा एक ही प्रकार की होती है, बट रियली अगर आप रेगिस्तान में चले जाएं तो वहाँ इतने कम्युनिटीज हैं और हर कम्युनिटी के बोलने का अंदाज अलग है, और जिस कम्युनिटी के बारे में ये फिल्म है, जिस पर आधारित है, और ये जो लेजेंड है स्कॉर्पियन सिंगर की, ये एक सिंधी कम्युनिटी है। Okay. तो उनका लहजा कुछ अलग है। अब गुलशिफ्ते फरहानी के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। Right. वो तो हिंदी भी नहीं बोलती है, तो वो डायलेक्ट, और वो भी हिंदी सिंधी मारवाड़ी का जो मिक्स है वो कैसे पकड़ेगी। तो एक बात हमारे लिए बहुत अच्छी रही कि जो गुलशिफ्ते है, शी इज अ ट्रेन्ड सिंगर, Okay. और बहुत ही खूबसूरत आवाज है उसकी, और गाती बहुत ही सुर में है, तो we got her a teacher and she started learning Hindi, और धीरे धीरे फिर डायलेक्ट भी पकड़ने लगी वो। अब there is certainly a little bit of an accent जो है Right. उसका, लेकिन उसने एक कमाल की चीज की है मेरे हिसाब से। आप बताइएगा मुझे जब आप फिल्म देख लें, कि वो डायलेक्ट में उसने एक म्यूजिकलिटी रखी है, और वो म्यूजिकलिटी कैरेक्टर के हिसाब से मुझे एकदम सही लगती है, कि ये जो औरत है जो सीख रही है ऐसा गाना गाना जो हर प्रकार के विष को खत्म कर दे, कि उसकी आवाज कुछ ऐसी होगी। So I think she worked very, very hard. Right. Or you will see in the film what she has achieved. Definitely. And you can't take this fact away that जब लोग फिल्म देख रहे होंगे तो एक तो फिल्म की स्टोरी है, एक फिल्म के इमोशंस हैं, एंड एक इमोशन है हर उस फैन का जो इरफान साहब को लेकर है। You may have so many stories to relate, कि शूटिंग के क्या एक्सपीरियंसेस थे, फिल्म को लेके उनकी क्या एक्साइटमेंट थी, और फिर फिल्म इंडिया रिलीज नहीं ले पा रही थी तो लेके किस तरह की बेचैनी थी। सो इफ यू कुड जस्ट शेयर समथिंग। Well, I can talk about, one of the incidents that happened Right. on the film. And there was a particular scene that we were doing with Irfan, and we were just not getting it. कुछ कुछ बात नहीं बन रही थी। तो शाम को हम जब पैकअप कर रहे थे, तो इरफान ने मुझसे कहा कि चलो थोड़ा ड्राइव के लिए चलते हैं। तो मैं बैठ गया उनकी गाड़ी में और हम चल पड़े रेगिस्तान में, रेगिस्तान के जो रास्ते हैं। और एक बात अच्छी थी इरफान और मेरे बीच में, कि हम घंटों बैठ सकते थे विदाउट सेइंग एनीथिंग टू ईच अदर, एकदम खामोशी में। अगर वो कुछ देखे तो उनकी नजर ही काफी थी मुझे बताने के लिए कि तुम भी वहां देखो। Right. तो एक आध घंटा हम ड्राइव करते रहे, और फिर हमने देखा इट वाज गेटिंग डार्क। तो हमने देखा कि देयर वाज अ चाय की दुकान। तो इरफान ने कहा चलो चाय पीते हैं। So we went into the shop and we got tea, and I bought 2 packets of glucose biscuits. Okay. तो हम बिस्किट खा रहे थे और चाय पी रहे थे, और मैंने देखा कि एक बुलॉक और एक छोटी गाय हमारी और आ रही है। Okay. And they were emaciated, एकदम bones, skeleton, हड्डी हड्डी दिख रही थी उनकी। तो जब वो हमारे करीब आए तो मैंने बुलॉक जो है उसको बिस्किट दिया,
लेकिन जब मैं बिस्किट वो छोटी गाय को देने वाला था, तो ये बुलॉक अटैक्ड मी, Okay. अपने सिंगों से, एंड शी स्टार्टेड हिटिंग मी really hard. मुझे तो लगता था कि that I've broken my ribs, you know. And Irfan told me jump back over the wall, but it was impossible. So he jumped in front of the bullock and pushed its neck away from me, and we jumped back over the wall. Now I think anybody else, वो तो बहुत गुस्सा हो जाते उस bullock से, हाँ you know. हाँ. लेकिन इरफान वो चले गए दुकान में और कुछ और बिस्किट्स ले आए, और धीरे धीरे वॉल के, अब हम सीख गए थे, तो वॉल के इस तरफ रहकर उन्होंने बिस्किट खिलाए बुलॉक को, और उनसे बात करना शुरू हो गए. अच्छा. कहते हैं, अरे जनाब, अरे दोस्त, हम तो खिला रहे हैं तुम्हें और तुम मार रहे हो हमें, ये क्या हुआ? ये तो रेगिस्तान की संस्कृति नहीं है, you know? तो आधा घंटा वो बुलॉक से बात करते रहे. एंड बिलीव यू मी नॉट, वो बुलॉक इतनी शांत हो गई, कि फाइनली we could just go and caress it and feed it and feed the other small poor cow. Right. So I think this sort of an incident tells you something about Irfan, that he always had this ability, to find a language to speak not only to human beings and to calm them and to make them feel that they had all his attention. Right. But he could also do it with animals, and especially a violent animal like this. Right. So this is one thing. अब इसका असर हुआ या नहीं हुआ, I don't know, क्योंकि सीन जो हम नहीं कर पा रहे थे, वो तो कुछ अलग ही था. हाँ. लेकिन दूसरे दिन हम जब शूट में पहुंचे, तो एक एनर्जी जो लेकर आए इरफान, मुझे लगा कि वो बुलॉक की एनर्जी कुछ उन्होंने हासिल कर ली है. And he brought that energy, और एक shot में we managed to do it. Wow. So he had this ability to to relate to everything. हवा का झोंका हो, एक पेड़ हो, शर्ट की क्रीज हो, हर चीज में वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे, और उससे एक हल्की सी इमोशन जो पैदा होती थी, वो ड्रामा में हमने कभी सोची नहीं थी, लिखी नहीं थी. वो उनसे एक प्रकार का, जैसे म्यूजिक में कुछ ऐसे स्वर बन जाते हैं. That's how they would emerge from him. And to me, his performances are like music. Yes, right. No wonder वो उनके लिए भी कहा जाता था वो ऐसे मदारी हैं जो आपको आराम से नचा सकते हैं और आपको अपने काम से एंटरटेन कर सकते हैं बिना कुछ बोले भी. एंड ये जो इंसिडेंट आपने नरेट किया है, इट इज जस्ट सच अ एप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ all that has been ever said about him. Obviously ये film already around the world international film festivals में दिखाई जा चुकी है. Indian audience is going to see it for so many emotions related to it. आपकी as the maker जो इतना एसोसिएटेड रहे हैं अपनी इस फिल्म के साथ में इतने लंबे समय से, क्या एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरे दिल में जी. वो ये है कि अगर हम सब मानते हैं और इतना प्यार करते हैं इरफान को, और सब मानते हैं कि इंडिया के उम्दा एक्टरों में से एक इरफान खान है, तो देखिए, he deserves to be seen for the great actor he is, right, on the big screen, क्योंकि जो वो काम करते हैं वो शायद पूरी तरह हम ना एक्सपीरियंस कर पाए on a laptop or on television. एक बड़ी स्क्रीन में जिसके लिए उन्होंने इतना काम किया है, वो जाके हम देखें.
And I think that would show our tribute to him. That would show our real love and homage to this great actor. कि हम आपको वैसा देखें जैसा आप हमें दिखाना चाहते हैं बिल्कुल अपने आप को. You said it so rightly कि उन जैसे बड़ा कलाकार जो है उन्हें बड़े पर्दे पर ही देखना is going to be the apt tribute to him from all the fans. So I really hope कि ऐसा definitely हो. Watch it for the love of cinema. Watch it for the love of passion that all these great people have got to cinema, and of course watch it for it fun. So Anup, on that note, thank you so very much for this interview, and I wish you all the luck for the success of not just this film. Again, success I'm not talking about in money, but success कि हमारे दिल तक ये फिल्म पहुंच जाए, and for all your future endeavors. निधि बहुत बहुत शुक्रिया आपका. A great pleasure. Thank you. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. Bye bye.